Welcome students. Today we are going to start the stereochemistry. We'll take an example of stereoisomer and we'll take an example of optically active compound and we'll see how it is optically active and what is the reason behind it and what are the new points behind optical activity. Okay. Now, yesterday we are dealing with the dextro and levo compound. Okay. Dextro compounds are optically active compounds which can rotate the plane polarized light into right direction or clockwise. Means dextro isomers are called as D-isomer. Okay, D-isomer, and D-isomer or dextroisomer can be designated by plus sign. Okay, and levo compounds are those compounds which are able or which can rotate the plane polarized light into anti-clockwise direction or in the left side. Okay, on the basis of this, levo is designated as L isomer and the sign is negative. Okay, this is the conventions. D, small d for dextro, positive sign for dextro. Okay, small l for levo and negative sign for levo isomer. Okay, now we will see an example. A well-known example is of lactic acid. Okay, and in the previous classes we have also seen that dextro compound and levo compound, if both the compounds are taken in equimolar quantities and they are mixed together, means what we can say, dextro and levo इक्वल क्वांटिटी. ओके, मोल्स में मेजर करेंगे हम और दोनों का जब हम मिक्सचर बनाएंगे, ओके, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज racemic mixture. Okay, this racemic mixture is optically inactive. This is optically inactive. Okay, the mixture will not show optical activity. The mixture cannot rotate the plane polarized light in left or right direction. Okay, now we'll take an example. How will we represent the dextro and levo isomer? Okay, now lactic acid. What is the formula of lactic acid? Lactic acid, the formula is COH and H. Okay, जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग उसके ऊपर ध्यान रखिए, COH and H. अब एसिड बोला है हमने, ओके, इट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई विल कनेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके, and one methyl group. Okay, this is lactic acid. Okay, we can shortlist is
carbon 1 2 3 3 carbon, we can write C3. Okay, hydrogen 3 4 5 6 means we can write H6. Oxygen 1 2 3, we can write O3. C3 H6 O3. Okay, so this is the empirical formula and this is the structural formula. Okay, now listen, how will we decide this is a dextro and levo isomer? Okay, now first of all we have to observe the molecule. Okay, in this molecule सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को आपको पहचानना है तो उसमें असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, मतलब सेंटर में कार्बन होना चाहिए. ओके, कार्बन शुड बी इन द सेंटर एंड दिस कार्बन is tetravalent but the valencies is satisfied by the different groups and atoms. For example, यहाँ पर carboxyl group है, here hydroxyl group at this position, methyl group at this position, hydrogen, all the different groups or atoms. Okay, in this manner we can say that this compound is a symmetric compound and this carbon is a symmetric carbon. Okay, now it is fit for optical activity. Now hydroxyl group is on right hand side, that's why I will say D-lactic acid. D-lactic acid. और आपको अगर क्या बनाना है लेवो कंपाउंड बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है आपको पोजीशन चेंज करना है. क्या किया मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, ये बन गया आपका एल लैक्टिक एसिड. This is L-lactic acid. Okay, we can say plus lactic acid and we can say minus lactic acid. Okay, this is plus lactic acid and this is minus lactic acid. This is dextro D-lactic acid and this is levo L-lactic acid. Okay, so this is the scenario. Okay students, the next point is asymmetric carbon. The word asymmetric means which is not equally divided into two half. Okay, symmetry means, how can we define the symmetry? Symmetry means if a substance which is able to divide into two equal parts, we can say it is a symmetrical substance. If we cannot, then we will say asymmetric substance. Okay, and we have seen the symmetry in case of the Markovnikov rule. We have taken the alkene, 2 carbon alkene, that is can be divided into 1 carbon, symmetric alkene. We have taken 3-membered carbon alkene. Okay, it is divided into 2 different half, 1 carbon and 2 carbon, asymmetric alkene likewise. Okay, now what is the definition of asymmetric carbon? Asymmetric carbon, this is the asymmetric carbon and it is a tetravalent carbon. Okay, but all the valencies must be satisfied by different monovalent atoms. For example, here A, B, C and D. Why we are taking A, B, C?
A is a different monovalent atom or group, B is different, C is different, D is different. Okay, as we have taken the example of lactic acid. Okay, the asymmetric carbon which is surrounded by for example अगर हम इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दें तो विल राइट COOH, here will write OH group, here we will write CH3 and here we will write hydrogen. Okay, so this is the asymmetric carbon, and asymmetric carbon is represented by the asterisk mark. Okay, स्टार के मार्क से हम क्या करेंगे, उसको डेजिग्नेट करेंगे, उसको शो करेंगे. ओके, सो asterisk mark is important. Asterisk marks will show you asymmetric carbon. Okay, so this is an example of asymmetric carbon, and this general example I have converted into lactic acid example. Another example is a well-known example which is sometimes asked in the CBSE exam is 2-chlorobutane. 2-chlorobutane. Okay, 2-chlorobutane, we will draw the 2-chlorobutane. 2-chlorobutane हम ड्रॉ करेंगे. ओके, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. ओके, नाउ 2-chloro नंबरिंग कर देंगे इसको 1 2 3 4. कार्बन नंबर 2 कंटेन्स क्लोरीन, ये क्लोरीन लगा दिया हमने. ब्यूटेन बोला है तो मतलब सभी कार्बन के वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देने हैं. ओके, CH3, या हाइड्रोजन, here CH2, here CH3. Now observe it. This is the asymmetric carbon. Why asymmetric carbon? Because this is a methyl group, this is a hydrogen and chlorine, and this is a different group, that is ethyl group. Okay, four substituents are different. Okay, that's why this carbon is marked by the asterisk marks and is called as asymmetric carbon, and this compound is optically active. Okay, now another example we can take glucose. Okay, glucose is an example of optically active compound, and we'll see some important things in that compound. Now listen student, the main problem is how to remember the formula of glucose. ग्लूकोज का फार्मूला कैसे लर्न करना है? ग्लूकोज के फार्मूला लर्न करने की सिंपल ट्रिक ये है कि आप एक चेन में 6 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे. पहले कार्बन को अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बना देंगे, लास्ट वाले को हम प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बना देंगे. ओके, अब कितने कार्बन बचे आपके पास में? 4 कार्बन बचे. तो 4 कार्बन में आपको क्या करना है? पहले कार्बन को OH करना है. ओके, दूसरे को H करना है, तीसरे को OH और चौथे को भी OH करना है. मीन्स आप देखेंगे आपको कि आपको हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में दिखेंगे. ओके, और राइट साइड में आपको एक ही हाइड्रोजन दिखेगा. ओके, अब इधर क्या करेंगे आप? इधर हाइड्रोजन लगाना है, इधर H है तो इधर OH लगाना है. ओके, H. सो दिस इज द ट्रिक. ये ट्रिक से आप प्रैक्टिस कर लो, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. ओके, नाउ अब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि कितने स्टीरियो सेंटर है, कितने असिमेट्रिक कार्बन है. दिस कार्बन, ओके, अल्डिहाइड ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप, एंड होल दिस ग्रुप, ये पूरा ग्रुप. सो दिस इज फर्स्ट स्टीरियो सेंटर. ओके, दिस इज सेकंड स्टीरियो सेंटर. Okay, hydrogen, hydroxyl, and this group is different and this group is also different. Okay, अब इसको देखेंगे हम, ये भी आपका स्टीरियो सेंटर है,
इधर OH है, इधर H, और ये पूरा ग्रुप सेपरेट हो गया और ये नीचे का पूरा ग्रुप सेपरेट हो गया। कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? 3 स्टीरियो सेंटर हो गए। अब ये कार्बन को भी मैं मार्क कर देता हूँ। इधर क्या है, नीचे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, इधर OH ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर पूरा 4 कार्बन का डिफरेंट ग्रुप है। तो ये भी क्या हो गया? स्टीरियो कार्बन हो गया। ओके, सो दिस इज the molecule which contains, okay, 1 2 3 4 asymmetric carbons. Okay, this question can be asked in exam and it is very important questions. Okay, thank you students.